are two ways to rank your website on Google search engine result page. The first one is white hat SEO and the another one is black hat SEO. The white hat SEO is mainly that Google allow you to use those techniques to rank your website on Google search engine result page, and the another black hat SEO that Google do not allow you, and if you are using those black hat SEO techniques, then Google maybe penalize your website and put your website down in the search engine result page. So in this video we are going to discuss about what is white hat and what is black hat SEO. So let's get started. What is white hat and what is black hat SEO? Basically, white hat SEO lies under ethical SEO and ब्लैक हैट एसईओ लाइज अंडर अनएथिकल एसईओ प्रैक्टिसेस. ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ आप इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए करते हो एंड जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, जो ब्लैक हैट एसईओ आप इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए करते हो एंड वाइट हैट एसईओ यू आर डूइंग फॉर प्रॉपर एसईओ. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टेक्निक, व्हाट आर द रिस्क इन वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ. अगर आप ब्लैक हैट एसईओ इंप्लीमेंट करते हो अपनी वेबसाइट पे तो आपकी वेबसाइट को किस टाइप के रिस्क और गूगल की पेनल्टी से फेस करना पड़ सकता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वाइट हैट एसईओ? वाइट हैट एसईओ होता है क्या मेनली? सो वाइट हैट एसईओ रेफर्स टू एथिकल एसईओ टेक्निक्स. बेसिक इट लाइज अंडर एथिकल एसईओ टेक्निक्स दैट फॉलो सर्च इंजन गाइडलाइंस. ठीक है, जो कि सर्च इंजन गूगल जो है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करता है एंड हम जैसे अपने कंटेंट क्वालिटी क्रिएट करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, अगर हम अपने एसईओ को ऑप्टिमाइज़ करके रखें या यूज़र इंटरफेस को हम ऑप्टिमाइज़ करके रखें. ठीक है, नेचुरल बैकलिंक्स बिल्डिंग, लाइक यू आर क्रिएटिंग योर वेबसाइट बैकलिंक्स मैनुअली एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ. ठीक है, सो वाइट हैट एसईओ फॉलोज रूल्स सेट बाय बेसिकली गूगल. ठीक है, सो वाइट हैट एसईओ लाइज अंडर गूगल्स गाइडलाइंस. The next one is white hat SEO techniques. So what are the white hat SEO techniques? Creating high quality content creation. ठीक है, आप कंटेंट जो है वो आप हाई क्वालिटी का क्रिएट करते हो एंड प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च. यू आर डूइंग प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च. बेसिकली हम कीवर्ड रिसर्च में वॉल्यूम एंड कंपटीशन को कंसिडर करते हैं एंड ओनली देन वी विल फाइनलाइज आवर कीवर्ड. So this is what proper keyword research. And on page optimization, like you are optimizing your title, meta tag and heading on behalf of your primary keywords. And mobile friendly website, basically it lies under UI UX. ठीक है, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस. सो आप कैसा, आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, फास्ट वेबसाइट स्पीड है या नहीं. ठीक है, नेचुरल बैकलिंक्स लाइक डूइंग गेस्ट पोस्ट, एडिटोरियल लिंक्स एंड गेटिंग डू फॉलो लिंक्स एंड नो फॉलो लिंक्स ऑन योर वेबसाइट. इंटरनल लिंकिंग, आपने अपनी प्रॉपर होम पेज जो है वो आपके ब्लॉग सेक्शन से रिलेट है या नहीं. ठीक है, एंड देन कॉन्टैक्ट अस पेज, आपके जो ईच एंड एवरी सिंगल पेजेस हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है. ठीक है, कोई ऐसा ऑर्फन पेज तो नहीं है, लाइक लेट सपोज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट अस. ठीक है, अगर आपका अबाउट अस पेज है, ठीक है, इसके कोई इंटरनल लिंक्स है ही नहीं. ठीक है, ये एक इंडिविजुअल पेज है दैट इज़ नॉट इनडायरेक्टली लिंकिंग टू योर अनदर पेजेस. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ऑर्फन पेजेस. ठीक है, ऑर्फन पेजेस गूगल के जो बॉट है वो क्रॉल इतना इजीली नहीं कर पाते. ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट अ लाइक आइडल एसईओ. सो यू मस्ट हैव टू इंटरलिंक ऑल योर पेजेस विद अदर्स एज वेल. ठीक है, सो इसी को हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं. So next one is what is black hat SEO? So black hat SEO refers to the unethical SEO techniques. ठीक है, that manipulate search engine rankings like Google. ठीक है, that manipulate Google ranking and it focus on quick results. अगर आपको quick results चाहिए हो, ठीक है, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, लाइक कैसीनो. ठीक है, गैम्बलिंग. ठीक है, यहाँ पे मेनली ब्लैक हैट एसईओ की हेल्प से हम प्रोडक्ट अपने सर्विसेज को रैंक करवाते हैं एंड दिस इज़ मेनली फॉर क्विक रिजल्ट. एंड आप ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है एंड योर वेबसाइट कैन बी बैन फॉर एवर. ठीक है, सो मेनली हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने लूप होल्स को जो कि गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होते. ठीक है, एंड इग्नोरिंग गाइडलाइंस, लाइक आप गूगल के गाइडलाइंस को इग्नोर कर रहे हो. सो दिस इज लाइज अंडर ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स. So there are so many black hat techniques and we will discuss about a few of them, like keyword stuffing. You are putting
your keyword more than enough time. Like ideally you can put your keyword in your content like a 3 to 4% of your content strength, and you are putting like a 10 to 20% of keyword in your content. So this is what we call as keyword stuffing. The next one is hidden text or hidden links. आपने एक पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या करा कि लाइक यू आर पुटिंग योर लिंक, एंड दैट इज मेनली you are thinking that this link will not seen by Google bot, but still you are putting your link in it, and when Google bot see this link, only then your website will be penalized, and this is lies under black hat SEO techniques. The next one, cloaking. Mainly cloaking क्या होता है कि showing different content to user and search engine. ठीक है, आपने दो कंटेंट बना लिया, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग टू कंटेंट, वन फॉर यूजर एंड अनदर फॉर सर्च इंजन, ठीक है, बट दे बोथ आर लाइज अंडर अ सिंगल पेज, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्लोकिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज बाइंग बैकलिंक्स. आपको जब आप इनिशियली एसईओ स्टार्ट करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेबसाइट दैट आर प्रोवाइडिंग यू 500 backlinks at just 200 rupees, 1000 backlink at just 500 rupees. So you don't need to buy those backlinks just because they are very spammy backlinks. They are created by bots, and Google penalize these kind of backlinks. So you must have to be aware like what kind of backlink you are creating for your website, for your client website. And next one is duplicate or copied content. You are searching for the keyword, and when you find some keyword that are ranking on the Google search engine result page first number, and you have just copied that content and change the name, change the basic details, and again you are putting that content on your page. So this is what we call as copied content, and Google also penalize your website on these kind of activities. And private blogging networks, you are putting your own link, you are doing link farming, like you have created 10 more websites, okay, and all these websites are redirecting to your main page. So this is what we call as link farming. So the next one is what is grey hat SEO. So grey hat SEO is basically mix of white hat and black hat technique. ओके, सो जैसे हमने वाइट हैट एसईओ की टेक्निक्स की बात करी, सो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यू आर फॉलोइंग गूगल गाइडलाइंस, एंड ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक इज टोटली अगेंस्ट द गूगल गाइडलाइंस, बट ग्रे हैट एसईओ लाइज इन बिटवीन देयर. लाइक लेट सपोज दिस इज वाइट हैट and this is black hat SEO, okay, and the gray hat SEO is lying somewhere here, okay. So this is what we called as gray hat SEO. ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं ग्रे हैट एसईओ. सो बेसिकली इट्स नॉट क्लियरली अगेंस्ट द रूल्स. ये बेसिकली गूगल इसको इतनी ईजिली पेनलाइज नहीं करती. स्लाइटली रिस्की दैन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, इट विल बी रिस्की बट इट कैन वर्क फॉर यू इफ़ यू डू ग्रे हैट एसईओ प्रॉपरली एंड फोकस्ड ऑन फास्ट ग्रोइंग, ठीक है. आप अपनी वेबसाइट को इमीडिएट या फास्ट रैंकिंग करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रे हैट एसईओ, बट यू मस्ट हैव टू एंश्योर दैट इज दिस strategy still work for your website or not, because there are a lot of Google update on these kind of SEO techniques. So what are the example of grey hat SEO? You are buying expired domains that redirect to your website, okay. You are buying excessive links and you are exchanging your link on so many website like immediately or within a short span of time. So these all kind of SEO techniques lies under grey hat SEO. Slightly content automation, like you are putting your keyword on ChatGPT and then creating your content, and you are putting that content on a Google search engine result page, so in the motive to rank your website. So this is slightly lies under grey hat SEO techniques, okay. So this work but still risky in the long term. So you won't survive with the help of grey hat SEO techniques in long term. It will be like you can say that it will be give you the fast growth, but you will not succeed in long term. So there are a lot of penalty that Google put on your website if you are doing grey hat or if you are doing black hat SEO techniques. So we will discuss about some of them. Like first of all, what are the Google penalty, what are the types of Google penalty? There are two types of Google penalty. The first one is algorithmic and the second one is manual. So search engine like Google can penalize website in two ways basically. So first one
manually, it will be penalize your website manually. And the second one is algorithmic penalty. Okay, so when you will get manual penalty, it will be applied by Google team, and you will get a notification in Google Search Console. Basically, Google Search Console is a tool that is provided by Google for your website to check your website performance and check the Google bot what are they are doing on your website. Okay, so this is, you will get a notification if you find any manual penalty on your website. And the next one is algorithmic penalty. So an algorithmic penalty is basically like it will be applied automatically. It happen after algorithm update, and you are aware about the Google core update. So there are a lot of websites that found in this algorithmic update, and their all ranking are dropped just because of this algorithmic update. So you must have to be aware about like a Google update as well. And the major updates like for content, that is mainly for Google Panda, and the spammy backlinks, for spammy backlinks you can find the penguin algorithm that is mainly provided by Google to find the spammy backlinks on each and every single website. So this is what Google penalty means. Okay, so the next one is like, what are the final strategy for beginners if they are starting SEO? So what I will suggest to them, like फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन योर क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, आपको अपना कंटेंट जो है उसमें 100% एफर्ट्स लगाने. ठीक है, यू डोंट नीड टू जस्ट सिंपली copy and paste, like you don't need to use plagiarized content. You must have to do proper keyword research with the help of some free tools, with the help of some paid tools. The free tools are like Google Keyword Planner, and the paid tools are like Uber Suggest, Shamrus. These all are paid tool. You can use these tools for your keyword research. And the next one is building natural backlinks. You are creating backlinks for your website manually, and you don't need to just like putting your website on ChatGPT and saying that hey, please create 100 backlinks for my website. They all are spammy backlinks, and Google penalize, and they all are lies under Black Hat SEO tactics. So you don't need to buy those kind of links at anywhere. Okay, and you don't need to pay a single penny for any like paid backlinks or etc. So the next one is improve website speed. You must have to improve your website speed for user interface and your user experience. ठीक है, अगर आपके वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है, देन इट विल बी डेफिनेटली हैम्पर योर वेबसाइट, एंड इट विल बी डेफिनेटली हैम्पर यूज़र एक्सपीरियंस एज वेल. सो यूज़र जो जैसे आपकी वेबसाइट पे आता है, एंड दे विल बाउंस बैक टू योर website just because your website speed is not enough. So you must have to improve your website speed to get a regular client on your website, to get a regular views on your website, to get a regular visitor on your website, and stay updated with the Google algorithmic changes. ठीक है, अगर आप if you are aware about Google core update, then it will be okay. Otherwise, if you are not still aware about what is the Google core update, you can see there are a lot of video on YouTube, so you will be aware about like what is Google core update, and it's a very big update that is comes under I think 2025. So you must have to be aware about what are the Google core update, and only then you will have to put your SEO efforts on your website so you can rank on the first page of Google search engine result page. So thank you so much guys, this is what I wanted to convey you in this video, and I hope if you find this video informative, then make sure you like our channel, and if you have still any question in your mind, then please put it in the comment section, so we will definitely get some idea, and we will definitely answer your doubt. And if you find this video informative, make sure you like our channel and subscribe our channel so that you will get notified on our next video. So thank you so much.